Hey guys, what's up? Welcome back to our channel. I'm Chef Aruna from Truffaut Nation Baking Academy, where we help aspiring bakers just like you to become professional pastry chef. और आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस हनी आलमंड केक। नॉट ओनली ये एक एगलेस केक है, बट ऑल्सो एक बहुत ही सॉफ्ट एंड टेंडर भी है। इस केक की दो एलिमेंट्स है, दैट आर द स्पॉन्ज एंड द हनी आलमंड सिरप। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज दैट ये कम्प्लीटली होल व्हीट फ्लावर से बनी है। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें so that you guys can stay updated with all our upcoming videos. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस 6 इंच राउंड बेकिंग टिन को ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर प्लेस करेंगे। अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव कर लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम होल व्हीट फ्लावर। Followed by baking soda, baking powder and sugar. Now in this same bowl, we'll add curd and start mixing it. Then we'll add in honey, along with water, milk, oil, mix everything together to get smooth and lump-free batter. We'll pour this batter into the prepared tin. And since it's a thick batter, we'll smooth out the top evenly. Now we'll bake it at 180 degrees Celsius for 15 to 20 minutes. Meanwhile, let's make the honey almond syrup. उसके लिए we'll melt butter in this saucepan. अब हम इसमें हनी और शुगर ऐड करेंगे। और शुगर को डिसॉल्व होने देंगे। Once the sugar has dissolved properly, we'll add in cream, cinnamon powder, whole almonds, and chopped almonds. We'll mix everything well for a minute or so, then transfer it to a bowl. So हमारा स्पॉन्ज 80% बेक हो चुका है। Let's take it out from the oven. So guys, if you have dough in your sponge, then press the top with a spoon a little.
Now we'll pour this honey and almond syrup above the sponge and spread it evenly. एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस रेसिपी देन आई एम श्योर आपको हमारी मावा केक की रेसिपी भी पसंद आएगी, लिंक फॉर विच इज इन द डिस्क्रिप्शन एरिया बिलो. नाउ विल बेक इट अगेन फॉर 10 to 15 minutes. So our cake has baked properly and has completely cooled down. Now we'll demold it. So as you guys can see that the cake really looks beautiful and it tastes amazing too. I hope you guys like this recipe. Let us know in the comment section what you want to learn next, and I'll be back with another incredible recipe. Do hit the bell icon to stay notified with all our upcoming videos. Till then, keep baking.